A closer look at the 25-day journey. Okay, we are live now. Hello everyone and welcome to our another live streaming जिसमें हम देखेंगे SpaceX के लॉन्च के बारे में। हम कल भी देखे थे SpaceX का लॉन्च और आज भी है। ये एक जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ 8 मिनट है लॉन्च के में। ये एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है फैल्कन 9 रॉकेट के मदद से, और इसमें सेकंड स्टेज का हमें कोई भी कैमरा व्यू नहीं दिखाया जाएगा। सिर्फ फर्स्ट स्टेज जो लैंडिंग होगी उसकी लॉन्च होगा, क्योंकि ये मिलिट्री सैटेलाइट है और मिलिट्री का कोई भी, इसकी वजह से शायद ये सेकंड स्टेज का हमें नहीं दिखाया जाएगा, पर कोई बात नहीं। काफ़ी छोटा। हेलो हेलो डोमिनेंट, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? तो ये काफ़ी छोटा सा क्विक अपडेट है और क्विक लॉन्च है, क्योंकि इसको कुछ देर के बाद ही बंद कर दिया जाएगा। लगभग 8 या 10 मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा लॉन्च के, क्योंकि आगे का ये कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मिलिट्री सेटेलाइट है। फिर भी हम जान लेते हैं इस सेटेलाइट का नाम है, मतलब इस मिशन का नाम है SARah-1, जिसमें लॉन्च किया जा रहा है सेटेलाइट, और इसके साथ कुछ और भी सेटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन वो कौन सी सेटेलाइट है उसके डेटा हमें नहीं बताया गया है। और इस सेटेलाइट का ऑर्बिट क्या होगा, ये सी लेवल से 550 किलोमीटर के ऑर्बिट पे भेजा जाएगा, जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे रहेगा। और दूसरा, नहीं 550 किलोमीटर नहीं है, 750 किलोमीटर है, सॉरी 550 किलोमीटर नहीं है। और ये सैटेलाइट बनाया गया है एयरबस के द्वारा, और इसे ऑपरेट किया जाएगा जर्मनी एयर आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। और बात कर लेते हैं फैल्कन 9 रॉकेट की। तो पिछले लॉन्च में हमने देखा था कि फैल्कन 9 रॉकेट के जो फर्स्ट बूस्टर है उसको 13वीं बार रीयूज़ किया जा रहा है, लेकिन ये दूसरा बूस्टर है जिसको ये थर्ड बार यूज़ कर रहे हैं। इसके पहले 2 बार मिशन में यूज़ किए जा चुके हैं इसके फर्स्ट स्टेज जो बूस्टर है फैल्कन 9 का। और SARah-1 जो सैटेलाइट है उसका मास है लगभग 2200 kg, मतलब 2.2 टन के आसपास है। और जो एडिशनल सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, पर कोई बात नहीं। और बात करें हम कि फैल्कन 9 के कितने लॉन्च हो चुके हैं अभी तक SpaceX के। ओके, आई एम एक्साइटेड, या ग्रेट। तो फैल्कन 9 रॉकेट के अभी 155 लॉन्च किए जा चुके हैं टोटल, 159 सॉरी 159, और इसमें से 125 बार लैंड किए जा चुके हैं। तो ये काफ़ी बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और 2022 में अगर हम बात करें कि फैल्कन 9 कितने मिशन कर चुका है या फिर कितने बार लॉन्च किया जा चुके हैं, तो ये नंबर है 25। मतलब 2022 अभी 6 महीना भी नहीं बीता है और 22 लॉन्चेस कर चुका है, मतलब हर हफ्ते एक लॉन्च। ये काफ़ी बड़ा नंबर है कि हर हफ्ते एक लॉन्च किया जा रहा है SpaceX के द्वारा। कल भी एक लॉन्च किया गया था, आज भी एक लॉन्च है, और कल फिर से एक लॉन्च है SpaceX का फैल्कन 9 रॉकेट की वजह से, लेकिन अलग फैल्कन 9 रॉकेट है। लेकिन फिर भी SpaceX बहुत हेक्टिक चल रहा है अभी शेड्यूल। तो चलिए देखते हैं ये मिशन। 5 मिनट 1 सेकंड बाकी है। Is now safely integrated at the top of Falcon 9. The next major milestone involves the Transporter Erector, or TE, which is the truss structure next to Falcon 9. In preparation for TE retraction, the TE clamp arms right beneath the fairing payload, the payload fairings start to open up. Now we do have a
a bit of fog in Vandenberg, which is pretty typical for Vandenberg at this time in the morning. So I don't think we're going to be able to see the clamp arms opening, but they are opening right now. And after those are fully open, that structure next to Falcon 9 will recline away from the vehicle in preparation for liftoff. Mission with flight proven orbiting class rocket. Previous one. The transport director also routes the vehicle's fluids, power, and telemetry umbilicals from the ground systems to the rocket and satellites until Falcon 9 goes internal on power and clears the pad. It's also what rolls the vehicle out to the pad and lifts it to that vertical launch position that you see on screen. So if you look closely, you can see that we are indeed reclining away from Falcon 9 right now. 3 satellite. तीन मिनट 15 सेकंड बाकी है लॉन्च होने के लिए. So we are just over T-3 minutes and counting. All systems so far are go for an on-time liftoff. The range is green. The weather, despite the fog that you see on screen, is also green. And the vehicle and payload continue to be healthy. If for some reason we are not able to launch today, we do have a backup window on Monday at the same time. Yeah. और अगर बात करें Falcon 9 रॉकेट के बारे में, तो इसमें 9 मल्टीमीटर लगे हुए हैं. 70 मीटर लॉन्ग है रॉकेट और 3.7 मीटर डायमीटर का है. और इसकी पेलोड कैपेसिटी है 20 टन, लगभग 16 से 20 टन डिपेंडिंग वॉट की फर्स्ट बूस्टर, उसका पहला बूस्टर रीयूज कर रहे हैं या फिर नहीं, तो लगभग मान सकते हैं 16 टन विथ रीयूज ऑफ फर्स्ट बूस्टर ऑफ Falcon 9 रॉकेट. 2 मिनट 15 सेकंड बाकी है. Amazing satellite, starting to form around Falcon 9. That is normal and expected for us at this stage in the countdown. 2200 kg मतलब 2.2 टन जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा 750 किलोमीटर from the sea. Today's launch is the second of our triple header. We do have another launch about 14 hours from now. एक बार फिर से अपडेट देता हूँ कि काफ़ी लंबा लाइव स्ट्रीम नहीं रहेगा क्योंकि इसमें हमें ऑन बोर्ड कैमरा सेकंड स्टेज का हमें नहीं दिखाया जाएगा SpaceX के द्वारा, क्योंकि ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है और सिर्फ लैंडिंग तक ही स्ट्रीमिंग रहेगा. Liquid oxygen loading has been completed. That is all of the propellant that is needed for today's mission. That is now loaded onto Falcon 9. So we are pretty much ready to go for liftoff about 90 seconds from now. 1 मिनट 24 सेकंड बाकी है लॉन्च होने के लिए. Be ready for that. Oh. शायद लॉन्चिंग का उतना अच्छा शॉट दिख ना पाए क्योंकि बहुत सारा धुंध छाया हुआ है और सुबह का टाइम है वहाँ पे. Now that we're in startup, both stages now beginning to pressurize for liftoff. 48 seconds left for the launching. LD is go for launch. And that is the final go for launch. Okay, final go for launch. Just under 40 seconds away. Let's listen in to terminal count. Almost 30 seconds to go. Which is the full future mission. T-minus 30 seconds. फ्यूचर मिशन अभी होने वाला है 25 तारीख का रॉकेट लैब का, जो मून तक अपने इतने छोटे से रॉकेट को मून तक भेजेंगे. कैप्स्टन इसका नाम है. काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी मून तक जा रही है. हम इसके बारे में अभी देखते हैं, फिर उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लॉन्च. ओके 3 2 1 0 ignition and liftoff. Congratulations, SpaceX. Successfully lift off. Vehicle pitching downrange. On board camera Falcon 9 first stage booster moment. हाँ, मैं बात कर रहा था रॉकेट लैब के लॉन्च के बारे में. कैप्टन नाम है मिशन का, इसमें वो मून तक जा रहे हैं, मतलब इतने छोटे रॉकेट की मदद से.
We are just over T plus 40 एक seconds private space into company. flight, and we saw Falcon Liftoff, 9 yeah. pierce the cloud layer, and it is लगभग up, 48 seconds heading into plus. space. Right now, the Merlin engines are throttling down for a period known as max Q. This is where the vehicle will experience the highest amount of stresses. मैक्स क्यू पार करने वाला है. मैक्स क्यू वो पॉइंट है जहाँ पे एयरक्राफ्ट नहीं, रॉकेट पे Vehicle is सबसे ज़्यादा supersonic. स्ट्रेस पड़ता है, वो पार होने वाला है. मैक्स क्यू पहुँच गया है 1 मिनट 10 Max सेकंड्स में. Q. ओके. एल्टीट्यूड है Right, with 12 max पॉइंट Q behind us, we are throttling the लगभग engines back up to 14 full power. किलोमीटर फ्रॉम We द सी have लेवल. 5 events coming Speed up है in quick succession. First up 1700 is going to be MECO, which stands for kilometer main per hour. engine cutoff. At that point, the 9 engines on the bottom of the first stage will shut off in preparation for the next event, which is SES-1, or second engine start 1. Or excuse me, the next event is stage separation, where the two stages will separate from one another. Index chilling. The first stage will perform a flip to make its way back to our landing zone, and then we'll start with SES-1, which is second engine start 1, where that single Merlin vacuum engine on the second stage will ignite and continue to carry our SARah-1 satellite into orbit. For MECO today's point landing, पहुंचने the वाले हैं. first stage will, लगभग after it 43 performs किलोमीटर के its altitude flip, पे है. will perform a boost back burn. 5400 And then 5000 after the boost back burn begins, we'll have fairing deploy. 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे. प्लस 2.18 सेकेंड. सॉरी. MECO, minutes. stage separation confirmed. ओके. सक्सेसफुल स्टेज सेपरेशन. Stage 1 boost back burn is starting. To moon with very small rocket is amazing, and also Fairing separation Yeah. confirmed. to moon with very small rocket is very Awesome. amazing. So we हाँ. saw main ये engine cut off, and Rocket we saw Lab the two उसी stages separate from one strategy another. से moon We तक did जाएगा, get जैसे audio PSLV confirmation of भेजा the गया था. second engine start एक बार चक्कर लगा के फिर on दो the बार second चक्कर लगा के stage फिर अपने ऑर्बिट को Merlin बढ़ा के vacuum engine. उस स्पीड That's तक ले pretty जाना. much the last call out that we'll ऐसे ही किया hear जाएगा. from the second आगे stage. So डिस्कस we'll just करेंगे focus जब on the first stage. That's what 25 you're seeing तारीख को on screen right now as it's जब हम performing its स्ट्रीमिंग boost करेंगे back burn. तब भी बात It pretty करेंगे. much flipped वो and is काफी heading रिवोल्यूशनरी और back बहुत where it came एक्साइटिंग from. मिशन It's going to be रहेगा. attempting its third And landing. stage फर्स्ट 1 स्टेज boost back वापस आ shutdown. रहा है in और a few सेकंड स्टेज minutes. का इमेज नहीं दिखाया जाएगा, So जैसा that हमें boost पहले ही burn बता दिया गया did था wrap कि up. मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, इसलिए उसकी In ऑन order to बोर्ड कैमरा complete today's नहीं landing for दिखाया the जाएगा first हमें. stage, it has 2 more burns left. Next up is the entry burn, Grid where pins 3 on of the हो गए हैं Merlin ऊपर. engines will लगभग reignite, and this will help to 127 slow the किलोमीटर stage के ऑर्बिट down पे है. as it ऑर्बिट नहीं, re-enters the upper एल्टीट्यूड पे है, parts सी of the लेवल. Earth's atmosphere. फैल्कन 9 का फर्स्ट स्टेज बूस्टर After that, we'll वापसी have आने के लिए the प्लान landing हो रहा है burn. क्योंकि स्टेज सेपरेशन हो गया है. स्पीड डाउन हो रही है. This occurs just a few अभी. seconds before we land, and this is also the period where we'll deploy our Vehicle landing trajectory legs. nominal. अभी एंट्री स्टार्ट नहीं हुई है. ओके, वंडरफुल. That entry burn is happening in about 2 minutes. So we have a few minutes to enjoy the first stage as it continues to make its way back to the west coast for its landing attempt on landing zone 4. 4 मिनट 25 सेकंड हो गए लॉन्च हुए. ये तीसरी बार बूस्टर को यूज़ किया जा रहा है. We're seeing some periodic bursts of gas at the center of your screen. और That इस is रॉकेट में nitrogen coming यूज़ from किया our जाता है attitude control RP1 systems और that helps to liquid orient the oxygen vehicle. propellant. This is a view from inside the inner stage. And this view is from the top of the first stage, looking downward. You can see 2 of our 4 hypersonic grid fins there. Those, as we get closer, will begin to pivot and tilt. That also helps steer Falcon the 9 first look very stage back to beautiful its on targeted landing, landing yeah. zone. फैल्कन 9 लॉन्चिंग और लैंडिंग में दोनों में मस्त लगता है. एक लौता रॉकेट है जो लैंडिंग कर पाता है. मतलब ब्लू ओरिजिन का भी है और भी, और कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रॉकेट भी रीयूज़ किया जाता है लेकिन लैंडिंग नहीं है. So we're about 30 seconds अभी तो away यही है. from the beginning of our second of 2 burns for this first stage. ओके, री एंट्री स्टार्ट होने वाली है. एल्टीट्यूड गिर रहा है.
Vehicle trajectory हम लोग nominal. 100 किलोमीटर कारमान लाइन को क्रॉस कर The चुके हैं bottom left-hand side of the under screen is a velocity atmosphere. gauge of the first stage. Grid It's trains traveling active about हो गई हैं. 3,500 kilometers an hour Hypersonic now, grid but once trains we जो begin the hypersonic boost होता है back Mach burn, you number start to 5 see that के number ऊपर को बोलते हैं decrease. speed को And hypersonic then speed. after the boost back burn, or no, excuse me, not after the Altitude boost back गिर burn रहा है ends, और speed after भी the गिर रही entry है. burn ends, you'll continue to लैंडिंग see के the लिए speed Falcon decrease as 9 we hit रॉकेट के the फर्स्ट denser parts of स्टेज the पे Earth's atmosphere. जो थर्ड बार यूज़ किया जा रहा है मिशन में. और इस पूरे मिशन का नाम है SARah-1, जिसमें जर्मनी के मिलिट्री सैटेलाइट को भेजा गया है. ओके, Stage 1 entry burn has started. एंट्री बर्न स्टार्ट हो गया. And there's the entry burn. So 3 of the 9 कुछ engines ही on the पलों first में stage have लैंड relit. कर दिया जाएगा और As you can see, we are हमें indeed slowing लैंडिंग down देखने को the मिलेगा. first stage. Now 30 kilometer from the sea level, Falcon 9 first stage booster. So the entry burn has I completed. And like stage your 1 entry burn shut hairs, down. Vivek. And Thank you in so much. about a minute, we'll have the landing burn. Thank you so much. And we'll see if we can land this booster for the third time. 7 मिनट हो गया है. लगभग 1 मिनट में लैंड हो जाएगा और ये लोग फिर स्ट्रीम बंद कर देंगे. हम भी Stage स्ट्रीम 1 बंद FTS करना is पड़ेगा saved. क्योंकि स्ट्रीम बंद हो जाएगा इनकी तरफ से भी. फिर हम कल भी स्ट्रीम करेंगे जिसमें Falcon 9 रॉकेट का फिर से लॉन्च किया जाएगा. ओके, 8 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, री एंट्री. ओह Such सॉरी, a cool view of लैंडिंग Stage होने 1 जा is रहा है. transonic. going back through the लैंडिंग cloud का व्यू layer. का मजा ले. ओके. ओहो, Stage 1 landing burn has started. This is a great shot from the ground on the right-hand side. Stage 2 FTS is saved. Terminal guidance. Landing legs have deployed. ओके, सक्सेसफुली लैंडिंग. And welcome back, Confirmed. Falcon 9. That is And the Falcon third 9 has landed. Landing successful operations landing 11.100 for on this LZA. booster. तो It also Falcon marks 9 our फर्स्ट स्टेज 100th अच्छे से and लैंड हो 25th चुका है. overall ये successful मिशन recovery of an लगभग orbital class वाह, rocket, short including both live Falcon stream. 9 and Falcon Heavy first stages. With ओके, that, at the request of our customer, we are going to bring our webcast to a close. Thank you to Okay. Airbus for entrusting us with today's mission. It's been an exciting 24 hours with this doubleheader. तो ये एंड हो गया है लाइव स्ट्रीमिंग, इन्होंने एंड कर दिया है. तो आज के लिए बस इतना ही. ये थी Falcon 9 के कितना अच्छा लग रहा है लैंड में. या टुमारो वी हैव अ लाइव स्ट्रीमिंग Falcon 9 रॉकेट के लॉन्च का. तो कितना अच्छा लग रहा है. अमेजिंग लैंडिंग, यस, लैंड करते हुए. तो फिर मिलते हैं कल और एक्साइटिंग सबसे बेस्ट मोमेंट रहेगा 25 को, जब हम रॉकेट लैब के लॉन्च के बारे में देखेंगे और लाइव स्ट्रीम में आपसे बात करेंगे. और एक रिवोल्यूशनरी रॉकेट लॉन्च होगा जिसमें प्राइवेट स्पेस कंपनी मून तक जा रही है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ है कि कोई प्राइवेट स्पेस कंपनी कोई दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पे गई हो, मून या फिर मार्स पे. तो ये मून तक जाएंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. अपना ख्याल रखें. बाय बाय. थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग एंड स्पेशल थैंक यू फॉर द डोमिनेंट फॉर द कमेंटिंग अस एंड frequently messaging. Thank you so much for your support. Yeah, okay, thank you for joining, and now we end the live stream. Okay, thank you, bye bye.